ओके एवरीवन, हम लोग हेड ट्रॉमा अप्रोच करेंगे कि हेड ट्रॉमा का जब एक पेशेंट आएगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है. एज यू कैन सी बाय द इमोजी, तो हेड इंजरी होती क्या है? इट्स एनी ट्रॉमा टू द हेड रिगार्डलेस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. तो अगर एक हिस्ट्री आ जाती है ट्रॉमा की तो दैट इज काउंटेड एज हेड ट्रॉमा अप्रोच. सो ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी इज अ बिट डिफरेंट बिकॉज it is head injury with evidence of brain damage. For example, neurological deficit आ जाता है, neurological symptom आ जाता है, या GCS impaired है. So head injury, remember, is different from traumatic brain injury because इसमें evidence of brain damage है. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. जो GCS स्कोरिंग है, ठीक है, अगर 15 है तो नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, तो दैट मीन्स द सिवेरिटी वॉज प्रॉबली मिनिमल. अगर सिवेरिटी माइल्ड थी तो इट कुड बी GCS 13 to 15 और कंकशन हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ दैट. फिर उसके बाद हमारे पास मॉडरेट आ जाता है. सो मॉडरेट इज़ बेसिकली 9 to 12 एंड मे नीड इमेजिंग, ठीक है, वी माइट नीड टू डू इमेजिंग. एंड देन सिवियर 3 to 8. मिनिमम जो GCS स्कोर होता है वो 3 होता है. At risk of airway compromise, ठीक है, because we know that the respiratory centers are located in the midbrain, ठीक है. एंड सो ये जब इम्पेयर हो सकता है तो हो सकता है कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाए. सो जस्ट रिमेंबर, इट्स 15, इट्स 13 to 15, and then it's 9 to 12, and then it's 3 to 8, ठीक है. या अच्छा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय पैथोलॉजी. सो हाउ डू वी फिगर आउट देखने से? सो एक्सटर्नल क्या है कि लैसरेशंस या ब्रूजेस हो सकते हैं, ठीक है. फ्रैक्चर्स कैन बी लिनियर, डिप्रेस्ड, फेशियल, बेजल स्कल, ठीक है. सो ब्लीड्स हो सकते हैं जिसमें एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल, सब अराकिनोइड है. इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है एंड डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है. सो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? सो बेसिकली एक्सटर्नल में ये है कि व्हेन वी लुक एट द पेशेंट, तो वन थिंग इज़ कि उसके सर के ऊपर ब्रूज बना हुआ है या लैसरेशन है, ठीक है. फिर फ्रैक्चर्स की बात आ जाती है कि एक हो सकता है कि लिनियर फ्रैक्चर है, ठीक है, सीधा सीधा है, या हो सकता है कि इफ़ दिस इज़ दी स्कल, तो यहाँ पे डिप्रेस्ड हो सकता है, लाइक इट शुड हैव बीन लाइक दिस, तो डिप्रेशन है बिकॉज यहाँ से इम्पैक्ट हुआ है. फेशियल बोन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है. एंड देन बेसल स्कल एंड देन ब्लीड्स, वी नो कि ये इज़ आउटसाइड द ब्रेन मैटर, ठीक है. बट देन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इज इनसाइड ब्रेन मैटर, ठीक है. अच्छा, एंड देन वी हैव डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, एंड दिस इज़ के हमारे पास जो एक्सॉन्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं. सो देन वी डू इनिशियल असेसमेंट विच इज़ द ATE प्रोटोकॉल. सो व्हाट आर वी गोना डू इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे, ठीक है. एयरवे में हम देखेंगे इफ़ द GCS इज़ लेस देन 8, हमने कहा था दिस इज़ अ सिवियर इंजरी, राइट. तो हम एयरवे एट रिस्क, सो वी कैन कॉल द एनेस्थीसिस्ट, और हम जॉ थ्रस्ट करेंगे अगर स्पेशली सी स्पाइन इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज सस्पेक्टेड. सो देयर वाज एन MCQ इस पर भी आया था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट अगर एयरवे बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड है एंड GCS भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो इसका मतलब, इसका आंसर होता है जॉ थ्रस्ट, ठीक है. अब वो नेसोफेरेंजियल एयरवे इफ देयर इज अ बेसल स्कल फ्रैक्चर, ठीक है. तो बेसल स्कल फ्रैक्चर वी नो कि वो क्रिबीफॉर्म प्लेट वगैरह उसका हिस्सा है. सो फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से कि ऑलरेडी फ्रैक्चर है और उसके जो है फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, तो और बेसल स्कल फ्रैक्चर ऑलरेडी हुआ हुआ है और हम NG ट्यूब डालने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि हम फ्रैगमेंट्स को मज़ीद फ्रैगमेंट कर दें या फिर उसको डैमेज कर दें. सो वी अवॉइड दैट. ब्रीदिंग में ये होता है कि वी प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन डैमेज, इंजरी फ्रॉम हाइपोक्सिया, ठीक है. So what we do is we ensure adequate ventilation and oxygenation, ठीक है, because brain already damaged है, we don't want कि hypoxia में चला जाए. तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजनेशन करते हैं, हम O2 लगा देते हैं पेशेंट को और हम वेंटिलेशन देते हैं. And then C for circulation, so this is just to prevent secondary ischemia and ensure fluid resuscitation. So circulation हम manage कैसे करेंगे? हम IV fluids देंगे और IV fluids से जो है ischemia avoid होगा. Then D is for disability. So D is like GCS scoring, ठीक है. मैं टेबल नीचे बताती हूँ. फिर प्यूपल साइज एंड लाइट रिफ्लेक्स है. देन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं एंड ब्लड शुगर ग्लूकोज है बिकॉज ब्रेन हमें पता है कि वो ग्लूकोज का लेता है. इट ओनली टेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड करें क्योंकि ऑलरेडी इंजरी हुई हुई है, तो हम ग्लूकोज का सप्लाई भी ख़त्म कर दें तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल. सो देयर आर 4 थिंग्स जो कि यूर डूइंग इन डिसेबिलिटी असेसमेंट में, ठीक है. एक तो आपने GCS स्कोरिंग कर लिया, एक आपने प्यूपल्स देख लिया, ठीक है, आपने इसे और लाइट रिफ्लेक्स देख लिया, तो इसेंशली आपने आइज़ देखी, ठीक है. उसके बाद फिर आपने न्यूरोलॉजिकल साइंस और डेफिसिट्स के लिए चेक करना है एंड देन हमने शुगर्स चेक करनी है, ठीक है. सो दीज आर जस्ट द 4 थिंग्स. सो व्हाट आर वी, हाउ आर वी गोना डू दिस? वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर 4, 5, 6, ठीक है. सो think of it in the order that one would fall in love. The first, they say traditionally the eyes are like the first feature people fall in love with.
अच्छा ठीक है, because you look at someone, right, but then they open their mouth and they speak, ठीक है, so that's the verbal thing. And then हो सकता है कि you like the way that they, I don't know, walk, or just the way that they look, I guess, so that's kind of like the motor aspect of it, their build, if you will. So 4 5 6, this is the order to remember it. So जो eyes हैं, that is one none, one none, one none, ठीक है. Eyes ये है कि when would you open up your eyes, you just have to think of it in order and then place it chronologically. So one अगर none है, ठीक है. So 4 is if you open your eyes spontaneously, ठीक है, we know the most number. So 4 is अगर आपने खुद ब खुद अपनी आंखें खोलनी है, ठीक है. 3 is for example अगर बंदा सोया हुआ हो, ठीक है, तो वो कब वो आंखें खोलेगा जब उसको कोई आवाज़ देता है, तो दैट्स 3. एक होता है वो आवाज़ पे भी नहीं उठता, तो हो सकता है लाइक वो पिंच कर लें, ठीक है, या उसको पेन का थोड़ा सा स्टिमुलस दें. दिस रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम वेकिंग मी अप फॉर फजर. So the way that I think about this is कि एक ये होता है कि like 4 is like 4 out of 4, or like 100% marks would be कि I wake up spontaneously, I can figure it out on my own, like. And then next उसका जो दर्जा है, दर्जा number 3 would be कि उनकी voice पे मैं उठूँ, and then 1 is कि उनकी आवाज़ पे भी ना उठूँ, and she has to like pull my leg, which is a true story, and that's how I wake up. And then 1 is कि I don't even pray. So that's just one way to remember it, ठीक है. फिर उसके बाद हम verbal पे आ जाते हैं. So verbal we said was 5, ठीक है, 4 5 6. And so so the way to think about it is okay, 1 would be none, and then उसके बाद जो 5 है, that would be oriented, ठीक है. So so you have like proper verbal command भी बंदा follow कर सकता है, verbal cues भी, या verbal उसकी जो speech है वो ठीक है. Okay, so then उसके बाद क्या होगा? For example, think of it once again, like I want you to think about it from like sleepiness to drunkenness, ठीक है. That's how I think about it. कि सबसे पहले ये है कि you're oriented, so you're awake. So the first darja is awake, and then the last darja is none, ठीक है. Then sleep में क्या होता है कि you're confused. Like imagine someone just woke you up out of your sleep and you have no idea what you're saying. It's not कि आपकी speech impair हो गई है, वो मसला नहीं है. It's just कि आप confused हो गए हो, कि एकदम से आप उठे हो, ठीक है. And then the next thing is कि think of this as like someone just consumed alcohol. So the first step is that they can still speak, but their speech is like sort of inappropriate. So that means it's, by inappropriate doesn't mean that they yell profanities at you, of course, but it means that it's not like very cohesive. The words are like they don't really make that much sense. And then 2 is incomprehensible. Okay, like this it doesn't make sense, but the words you can tell. Like for example, if I say I really felt like a spaghetti yesterday, like that is a sentence that I'm articulating perfectly fine. However, that doesn't make sense. It's like an inappropriate sentence. It doesn't make sense. And then the last, like number 2, would be incomprehensible. Okay, if I'm mumbling, think of it as mumbling. So that's like the peak level of drunkenness. Okay. And then motor we said was 6 because 4 5 6. And then so the first thing is motor is think of it as like movement, okay. So 1 would be none, and then 6 would be to obey a command, okay, कि you do it. So then जो है क्या कहते हैं, the way to think about this is 2 would be like extension to pain, and 3 would be flexion to pain. So just remember, if you think about it, if you were to like think about your arm, right, so it's easier to extend your arm than to flex it. क्योंकि flex करने में, yeah, like if you were to like flex your leg when you're taking, like when you're swinging on a swing, for example, so it's easier to extend and harder to flex. So extension would be number 2, and then flexion would be 3 to pain. Now 4 would be कि they can feel the pain and they can withdraw. इसमें तो सिर्फ ये है कि हल्की सी extension, it's just kind of like, you know, moving your limb थोड़ा सा आगे. Flexion would be like थोड़ा सा withdraw it, ठीक है. I don't know why my person has so many fingers, okay? But ये है कि यहाँ पे उसको पेन elicit किया है, उसने थोड़ा सा इस तरह आगे की तरफ मूव किया, ठीक है. That is number 2. फिर हो सकता है कि उसने थोड़ा सा यहाँ इस तरफ लेके जाने की कोशिश किया, which is flexion at this joint, of course. So that would be 3. Withdraw करेगा तो that would be 4. And then 5 का ये है कि moves to localized pain, ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ पे elicit किया तो वो पूरा बंदा shift कर रहा है, not कि ये सिर्फ ये arm shift कर रहा है, ठीक है. तो it's like they can localize the pain, ठीक है. Or they move to like localized pain. And then the last is कि obeys in a command, कि आप उसको कहो कि यार do this, तो they're able to do this. So just to quickly revise this while I erase all of this
mess that I've made, we said that 4, 5, 6 is what we remember for the GCS scoring. ठीक है, हमने कहा है the order that you fall in love with, which is eyes, verbal, and then motor. ठीक है, और फिर हमने कहा eyes में we're thinking about your mom waking you up for fajr, so 1 would be to not wake up at all, 2 would be to, 1 would be to wake up when she slaps you, and then 3 would be to wake up when she calls for you, and then 4 and the highest darja would to be wake up for spontaneously, and then in 5 जो हमने चीज़ें की हैं तो we just create 5 levels. हमें पता the lowest level is no nothing, ठीक है. And so then the second level would be okay, so we thought the way we started thinking about this is being awake, fully awake, and okay, so that would be like completely normal oriented. And then the second thing is you just woke up, so you're confused. Then we thought about drunkenness, and we said inappropriate behavior hai. Then we said incomprehensible hai, and that's how we completed the 5. And then for 6, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, so we know that this is none, and we know that this is obeys a command, ठीक है, like you can move, so ये भी cut out हो गया, ये भी cut out हो गया. फिर हमने कहा है कि extension flexion, मैंने कहा extension to the pain, this is cut out, flexion to the pain, this is कि वो withdraws from the pain के हल्का सा, and this is कि वो localize कर ले pain को, तो that's just how to remember it.